Pakistan, a developing economy, is exposed to an ever-growing crisis of overpopulated urban centers and a growing energy and security crisis. This phenomena has reached a state of concern due to the existence of a mindset in the policy annals of Pakistan that are not acquainted with the significance of research, something that the developed democracies throughout the world base their development and progress on. It's through public policy and good governance that the country can make progress. Some of the biggest changes that can take place is when there is careful, directed research at particular issues and problems that the country is facing. हमारे यहाँ आप एक दिन सुबह उठते हैं और पता चलता है कि तेल की, गैस की या अशियाए खुर्दनी की कीमत बढ़ा दी गई है। क्यों बढ़ा दी गई है, कोई इसके बारे में बताया नहीं जाता कि किन हालात की वजह से ये काम किया गया है। Decisions made by the government are not just affecting the economy. Lack of facilities and poor infrastructure of energy sector, health and sanitation, education, and justice systems has turned the nation's frustration into confusion and helplessness as to where the problem actually lies. अमूमी तौर पे सरकारी दफातर में पॉलिसी मेकिंग के दौरान हम उतनी डेप्थ में नहीं जा सकते। गवर्नमेंट ऑफिसेज में शायद उतना टाइम नहीं मिल पाता। हमारे यहाँ एक मुश्किल ये है कि हर बार हुकूमत के बदलने के साथ पॉलिसीज़ जो हैं वो पहले वाली एकदम से डिस्कार्ड कर दी जाती हैं और नई पॉलिसी की इब्तिदा हो जाती है। गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस का इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी वो कम्प्लेक्स होता जा रहा है। इसको एक अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। जब तक एविडेंस बेस्ड रिसर्च, नॉट ओनली कल्चरली सेंसिटिव बट सोशली सेंसिटिव रिसर्च जब तक नहीं की जाएगी, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। Former Christian College took a step towards the solution by initiating evidence-based research to promote discourse on public policy and governance, a program that would provide the government with a roadmap for effective policy planning. Acknowledging the importance and the positive impact this initiative will have on Pakistan, the United States Agency for International Development, USAID, provided a grant to Foreman Christian College through its Small Grants and Ambassadors Fund program to facilitate evidence-based policy formulation in Pakistan by establishing a policy think tank. हमें जो ही ये ग्रांट मिली तो हमें लगा कि ये हमारी ख्वाहिश जो है वो एक ऐसी स्टेज पे आ गई है जिसको कि अमली शक्ल पहनाई जा सकती है। The Deputy Special Representative to Afghanistan and Pakistan, Ambassador Beth Jones, inaugurated the center that also houses a library comprising of over 2,200 books, a vast online data bank with literature and other informative material required, which will immensely support researchers in carrying out their researches. ये एक बड़ा अछूता और बड़ा अनोखा जो है वो आइडिया है कि हमने जो इस वक्त पाकिस्तान के असल मसाइल हैं उनकी बेहतरी के लिए हमने एविडेंस बेस्ड रिसर्च जो है वो प्रोड्यूस की। The Center for Public Policy and Governance undertook researches on anti-terror laws and criminal justice system, energy sector reforms, and informal sector and urban policy. Research methodology for the sanctioned researchers included both quantitative and qualitative techniques. Field surveys were conducted, and primary data was collected through questionnaire and focus group discussions. इस रिसर्च के थ्रू हमने इन तीनों अहम मुश्किलात का अहाता करने की कोशिश की। हमने गवर्नमेंट को ये बताया कि ये वो असल मसाइल हैं जिनको हल किए बगैर हम पाकिस्तान को 21वीं सदी के अंदर दाखिल नहीं कर सकते। To disseminate the research findings, the center conducted 12 policy dialogues, 3 seminars, and 14 training workshops. These sessions helped in raising awareness and building capacity of the stakeholders across the board, which included government officials, media and public representatives, and policymakers. It's not that the state and the government are not doing anything regarding terrorism, but none of these measures have achieved the kind of results that they were expected to achieve. What we're trying to say is no, your emphasis is misplaced. You need to look at the criminal justice system and hence suggest reforms to the entire system and then specifically police and all the other systems. एनर्जी सेक्टर हम डेली डील कर रहे होते हैं इसके साथ। रोज़ हमारे घर लोड शेडिंग होती है, तेल की प्राइस बड़ी होती है, गैस की लोड शेडिंग हो रही होती है।
ट्रेडिशनली जिस तरह से एनर्जी क्राइसिस को देखा जा रहा है उस तरह से नहीं देख रहे, और हम इसको एक प्योरली मैनेजरियल और एक गवर्नेंस इश्यूज़ के हवाले से फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर। हमने लो पेड वर्कर्स, होम बेस्ड वर्कर्स या फिर मज़दूर तबका जो है हमारा, इनकी रिसर्च करने के लिए कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, क्या वो उससे खुश हैं, क्या वो उससे सेटिस्फाइड हैं, और क्या इनकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखी जा सकती हैं अर्बन पॉलिसी में। The establishment of the Center for Public Policy and Governance with USAID support is a significant initiative towards promoting empirical research on policy and governance. An environment where students, researchers, and policymakers through literature, data, and training facilities can pave the way for informed decision-making at all levels, which will ultimately contribute to the development of Pakistan. हमारी रिसर्चेस को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने कबूल भी किया है और हमें मज़ीद इनवाइट किया है, जिसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, फाइनेंस का, काउंटर टेररिज्म और नेशनल काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट। हम तवक्को रखते हैं कि आइंदा भी उनके साथ मज़ीद हमारे ताल्लुकात बढ़ेंगे। मैंने ये लर्न किया कि किसी भी प्रोजेक्ट पॉलिसी के ज़रिए आवाम के लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने होते हैं, तो उस पॉलिसी को हियर से की बुनियाद के ऊपर डेवलप नहीं होना चाहिए, बल्कि एविडेंस बेस्ड एम्पिरिकल रिसर्च हो जिसकी बुनियाद के ऊपर वो पॉलिसी फॉर्मेशन हो। इस तरह की वर्कशॉप्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें ये तो पता होता है कि हमने किस तरह से प्रेशर बिल्ड करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि की डिसीजन मेकर्स कौन है। ये जो कोर्सेज थे इन्होंने मतलब एज ए स्टेक होल्डर मुझे बहुत फ़ायदा दिया। The need of the time is to produce policies that really deal with problems, that are forward-looking and shaped by the evidence rather than a response to pressures, that tackle the causes, not symptoms. We're delighted that we were able to set up a center that is dedicated towards research. CPBG, to the best of my knowledge, वो वाहिद इदारा है जो कि सस्टेनेबल और प्रोटेक्टेड रिसर्च कर रहा है अबाउट डिफरेंट पब्लिक सेक्टर इश्यूज़। हमारी जो रिसर्च USAID के प्रोजेक्ट्स की बुनियाद पे सामने आई है, हमें भी एक कॉन्फिडेंस आया कि हम नई रिसर्चेस करें। हम इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, हम जो है वो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के ऊपर, अब हम गवर्नमेंट को एक बड़ी अहम किस्म की इमदाद फराहम कर सकते हैं एविडेंस बेस्ड रिसर्च के थ्रू। तो मेरे नज़दीक तो इस सारे प्रोजेक्ट का, इस सारी रिसर्च का, इस सारी डायलॉग का अल्टीमेट बेनिफिशरी जो है पब्लिक है।